Good morning, students. Now, till now, we have been doing the literature part. We have completed some of the chapters in literature. Now, let's do a topic in the writing section. The first one that we'll be doing is notice writing. The notice writing part, that is mostly of 4 or 5 marks in your paper. It is considered to be very easy. If you remember some of the tips, some of the points, then you will be able to do it very nicely. Now, first of all, what is a notice? Now, a notice is a formal means of communication. The purpose of a notice is to announce or display information to a particular group of people. And notices, they are generally meant to be put up on specific display boards, whether in schools or in public places. Now, generally we find the notices in the newspaper also, which are for the public or someone who the notice is issued to an organization or someone in the public. Okay, so we can say that it is a formal mean of communication between the people, and it is formal because it contains only the precise information. Only whatever has to be conveyed is written in it. Now, as we go into the format of the notice, a notice should be written in the following format. First of all, the name of the organization or the issuing authority is written. Then it is followed by the title, that is notice. Then after that, a heading or a topic is put. The topic, whatever the notice is related to. Then the date is there, and then the body of the notice, from the next line you start with the contents. Then after that, the writer's, first of all, on the left hand side there will be writer's signature, then below that the name of the writer, and below that the designation of the writer. Clear? Now there are certain value points, certain points that you have to consider while writing the notice. So what are they? A well written notice must inform the readers about what, when, where, who and whom. That is, what is going to happen, for what you are giving the information, where will it take place, then when will it take place, then if it is an event or if it is a competition, who can apply or is eligible to attend. For if it is a program, कोई program है, in कल्चरल फंक्शन है तो कौन कौन अटेंड कर सकता है, या फिर कोई इवेंट है तो उसमें कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए. देन whom to contact or apply to, that is if you are willing to apply or if you are willing to attend, whom you have to contact. Then include only the important points, no unnecessary information is to be given. Begin with direct with the notice only. Don't have to write how are you, how are others. These all things are not written in the notice. Then add only relevant information if not included in the question. That is, many times in the question you are not given the hints that what you have to write. डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया होता है, तो आप फिर उस वक्त आप अपनी तरफ से जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें ऐड कर सकते हो. देन शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, that if you make long sentences you will make many mistakes. तो आपके सेंटेंस छोटे ही होने चाहिए और उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोटिस में आप जितनी मिस्टेक्स करोगे उसके मार्क्स कटते हैं आपके. प्रेजेंट द नोटिस विद इन अ बॉक्स, नोटिस लिखने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, उसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना होता है. नाउ वर्ड लिमिट इज जनरली 40 to 50 words, okay, and that is only for the body of the notice, that is the content of the notice. Then information that you have given should be presented very clearly and it must attract readers' attention at once. Increase the visual appeal of your notice, that is it, of course the same thing, that it should be attractive to the one who is reading. The language should be straightforward. Then standard abbreviations are allowed. Somewhere you can use the abbreviations but not many. Clear? Now you can see the format of a नोटिस. फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में. फिर उसके बाद में उसके नीचे जस्ट सेकंड लाइन में आप सेंटर में कैपिटल वर्ड्स में लिखोगे नोटिस. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे डेट आ जाएगी. फिर चाहे तो आप उसी लाइन के अंदर या फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आप
नोटिस का टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन से आप कंटेंट स्टार्ट कर दोगे, जो भी है नोटिस आप डिटेल देना चाहते हो वो सब उसके अंदर आ जाएगा। वन थिंग आई वॉन्ट टू से, डोंट स्टार्ट द नोटिस विद डियर सर और डियर मैम, ये सब नोटिस में नहीं लिखा जाता, ये सब लेटर्स में लिखा जाता है। देन आफ्टर एंडिंग द कंटेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल पुट योर सिग्नेचर, देन सिग्नेचर के बाद अपना नाम लिखोगे आप, और उसके बाद आप अपना डेजिग्नेशन लिखोगे। ऑफ कोर्स द नेम इज ऑफ द पर्सन हु इज इशूइंग द नोटिस। अगर क्वेश्चन में उसका नाम दिया हुआ है तो आप वही नाम लिखोगे, और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो और डेजिग्नेशन लिख सकते हो। क्लियर? आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। You have understood the format of the notice.